Hello everyone. Welcome to the second part of trigonometric equations. पिछले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे, ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या बात है। कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी जो आपको पर्टिकुलरली रिवाइज करना चाहिए, जो आपको आना चाहिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले. सो नाउ वी विल गो फॉरवर्ड एंड फाइंड. If you remember in last part, I told you about particular solutions, those roots of the solutions, root of the equation, and the second part was general solution. Okay, if you remember, I told you about if sine theta is equals to 0, the general solution theta was equals to n pi. If cos theta is equals to 0, theta was equals to odd multiples of pi by 2, and tan theta is equals to 0, then theta is equals to n pi. And subsequently for other we can also collaborate, but these three are the basic things. Okay, if you know these, then we can move forward. If you see, in this case 0, pi, 2 pi, 3 pi, and so on, there can be n number of cases with n number of angles which will satisfy. But we found that all of them, we are just using sequence and series. Okay, all of those angles are what? All of those angles are a multiples of pi. Any integer into pi are giving you that angle. Therefore, we have written it n pi, where n is what? N is a integer. In similar case, here the angles are pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2. So what we saw that these all angles are odd multiples of pi by 2. So we were wrote as 2n plus 1 pi by 2. Okay. Now how I can utilize if the equation is not given in this form, because getting every time you get a 0 is not possible. Now you will getting some other values also. So how to solve those questions? If I say, if I have an equation sine theta equals to sine alpha, I want to solve this equation. So how I will solve this equation? In order to find the general equation of this equation, what I will do, I will use sum to product formulas. You remember? If I write this as sine theta minus sine alpha equals to 0, then we will be using the formula sine C minus sine D. What is sine C minus sine D? Sine C minus sine D is equals to 2 cos C plus D by 2 sine of C minus D by 2. Okay. So, if we use this thing over here, we will get 2 cos of theta plus alpha by 2 sine of theta minus alpha by 2 equals to 0. Okay. Now, as the product of two things will be equals to 0 if and only if either one of them is 0. So, we have two cases from here. The first case is either cos of theta plus alpha by 2 is equals to 0. And another case is sine of theta minus alpha by 2, that is equals to 0. Okay. Now you can see it properly. If sine theta equals 0, theta can be n pi. These are the angles which I was telling. Sorry, I missed recording that part. I'll recognize later. But now you can see we haven't gone so much. If sine theta is sine alpha, sine theta minus sine alpha equals 0. Sine C minus sine D is 2 cos C plus D by 2 sine C minus D by 2. We are using the same formula. The product of these two will be 0 when either one of them is 0. Now we have just studied over here, if you can see, sine theta equals to 0. Okay, sine theta will be equals to 0 if theta is what? N pi. So sine of something will be equals to 0 if what? If theta minus alpha by 2 is equals to n pi. That means theta minus alpha is 2n pi, n is a integer. So theta will be equals to 2n pi plus alpha.
So from here I am getting a solution theta equals to 2n pi plus alpha. Okay. Now when we solve this part, so this will be equal 0 if theta plus alpha by 2 is equals to 0. This will give you 0 whenever it is odd multiple of pi by 2. Okay. So it should be 2n plus 1 pi by 2. 2 is cancelled. So theta will be 2n pi, or it's better to write it 2n plus 1 pi. Okay. 2n plus 1 pi minus alpha. Now observe this. दोनों में आप देख सकते हैं दोनों जगह पाई का मल्टीपल है, दोनों जगह पाई का मल्टीपल, एक जगह प्लस अल्फा एक जगह माइनस अल्फा है. वन एट वन प्लेस इट इज माइनस अल्फा, एट वन प्लेस इट इज प्लस अल्फा, बट द पाई मल्टीपल इज देयर. बट यू ऑब्जर्व वेन एवर द मल्टीपल ऑफ पाई इज इवन it is plus alpha, whenever it is the odd multiple of pi it is minus alpha. So now here ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाली बात है कि ऑब्जर्व करने की बात है. वी कैन कंबाइन दीज टू रिजल्ट्स. वी कैन राइट एन एक्सप्रेशन which will incorporate each and every part of these two solutions. If you see, all the angles theta are of the form of k pi, pi into integer. Here it is even, here it is odd, and every one contains an alpha, but it is plus alpha or minus alpha, that depends on whether the k is even or odd. So I utilize minus 1 to the power k. So theta is equals to k pi plus minus 1 to the power k alpha. This is the general solution of the equation sin theta equals to sin alpha. समझ में आया? तो ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आया. sin theta equals to sin alpha का जनरल सॉल्यूशन कितना आएगा? theta is equals to k pi plus minus 1 to the power k alpha. ये आपका जनरल सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. यहाँ पे आप k की अलग अलग वैल्यूज रखते जाइए और आपको अलग अलग वैल्यूज थीटा की मिलती जाएंगी. पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k. K is what? K is integer, and for every value of k you will be getting a different value of the theta, but it will give you all the angles, all the angles which satisfy that give you an equation which will be incorporated in this expression. So this is called the general solution of the equation sin theta equals to sin alpha. Okay. Now similarly we can talk about another equation, that is cos theta equals to cos alpha. Let's see it. Okay. Okay. Now if we want to talk about cos theta equals to cos alpha, cos of theta is equals to cos of alpha, we will be using the same technique, that cos of alpha minus cos of theta equals to 0. इस बार मैं इसको इधर लेके आया. आई हैव बॉट दिस वन दिस साइड. पिछली बार साइन में क्या कर रहा था? उल्टा कर रहा था. क्यों कर रहा था? 2 मिनट समझ में आ जाएगा, क्योंकि इन मैथ्स वी गिव अ बिट ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर द ब्यूटी एंड द लुक ऑफ द इक्वेशन. तो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द cos sum to product formula for cos c minus cos d. Actually it was not cos c minus cos d, it was cos d minus cos c. That will give you 2 sin c plus d by 2 sin of c minus d by 2. Remember this? Just because of that I did that thing. Okay. तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 sin of theta plus alpha by 2 sin of theta minus alpha by 2. Now either one of them should be equals to 0. So either sin theta plus alpha by 2 is equal to 0 or sin of theta minus alpha by 2 is equals to 0. Okay. So theta plus alpha by 2 should be equals to n pi, और here theta minus alpha by 2 should be equals to n pi. अगर आप confusion हो तो you can write it m pi, because n and m are the just integers. Okay. So from here you will get theta is equals to 2n pi minus alpha. From here you will get theta is equals to 2m pi plus alpha. So you can see we can combine these two, as in every expression we are getting an even multiple of pi, and in plus alpha and minus alpha both comes
इवन मल्टीपल ऑफ पाई के प्लस अल्फा जाओ या माइनस अल्फा जाओ, दोनों में हमें एंगल वही मिल रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर 2k पाई प्लस माइनस अल्फा, तो जनरल सॉल्यूशन विल बी थीटा विल बी इक्वल्स टू 2k पाई plus minus alpha. This is the general solution of the equation. Okay. So this is the solution for cos theta equals to cos alpha. Now let's come down to another equation that will be tan theta equals to tan alpha. Now this is much more easier to use actually. How? You can convert, look, this equation will be valid whenever tan theta and tan alpha is defined only. Okay, we will write those precautions in later on stages, but for the time being I can write this as sin theta upon cos theta is equals to sin alpha upon cos alpha. Cross multiply and bring on the one side, therefore sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha. क्रॉस मल्टीप्लाई करा और क्या करा, ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। दिस विल बी इक्वल 0. नाउ रिमेंबर दिस इज व्हाट, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ऑफ ए प्लस बी? साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी. ये फॉर्मूला होता था। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा विच विल बी इक्वल 0. So this will give you theta minus alpha is equals to n pi. Therefore, theta is equals to n pi plus alpha. Okay. Therefore, for the equation tan theta equals to tan alpha, theta will be equals to n pi plus alpha. Okay. तो ये तीसरी टाइप की इक्वेशन हो गई। tan theta equals to tan alpha का जनरल सॉल्यूशन होगा theta equals to n pi plus alpha. Okay. इसके अलावा तीन और इक्वेशंस आती हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर अल्फा. All of them will have same solution. Why? Because they are identical. How? Sin square theta equals sin square alpha. If I write this as 1 minus cos square theta, this will be 1 minus cos square alpha. 1 got cancelled. This, therefore you will get cos square theta equals to cos square alpha. तो ये और ये पार्ट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए. और अगर ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है तो दोनों का डिवीजन करोगे तो ये भी इक्वल है. बस शर्त ये है कि थीटा और अल्फा किसी पे भी cos 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इस कारण से तीनों सेम रहेंगे. अब जरा देखो कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल 0. Remember the formula, sin square a minus sin square b equals to what? Sin of a plus b into sin of a minus b. So sin of theta plus alpha into sin of theta minus alpha. ये 0 होना चाहिए. अब इसके दो तरह के सॉल्यूशंस आ सकते हैं. ये क्या होगा, या तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा 0 होगा या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा ये 0 होगा. तो दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू थीटा प्लस अल्फा is equals to n pi, and this will give you theta minus alpha is equals to n pi. So theta will be n pi minus alpha, and from here theta will be equals to n pi plus alpha. If we combine these two, we are getting n pi plus and minus alpha both. So all these three equations will give you one similar expression. General solution will be same. That will be n pi plus minus alpha. This is the general solution for all these three equations. Sin square theta equals to sin square alpha, cos square theta equals to cos square alpha, and tan square theta equals to tan square alpha. These are the general solution of these three equations. Are you getting my point? ये भी सबको clear है? Okay. So that brings us to the end of part 2, in which we have studied what are the general solutions. Okay. जनरल सॉल्यूशंस की इक्वेशंस क्या होती है. अब इसके आगे की बात हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे.